It lasts 100 to 120 days. Before the monsoon winds enter the... हमने कल जहाँ पे फिनिश किया था आपका onset of monsoon, this starts from there only. The Indian subcontinent. They encounter various atmospheric conditions on their way over the warm tropical seas. As a result, these winds are pulsating in nature and not steady. Due to this, the monsoon arrives with a sudden downpour of rainfall that continues for several days. This is known as the burst of the monsoon. Yesterday we talked about burst of the monsoon. जैसे इसका simple meaning है when rain continues for several days. बारिश हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, मॉर्निंग डे नाइट कंटिन्यू चलती जा रही है फॉर 5-6 डेज, तो हम उसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून. और बहुत हैवी रेनफॉल होता है. And can be easily distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula, generally by the first week of June. The state of Kerala is the first to receive rainfall. Subsequently, it divides into two: the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later, on approximately the 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountains cause the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon reaches Saurashtra, Kutch, and the central part of the country. Over the northwestern part of the Ganga plains, the Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge. The monsoon showers in Delhi are generally the gift of the Bay of Bengal branch. The monsoon reaches the capital by the end of June, tentatively by the 29th of June. By the first week of July, the monsoon reaches western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and eastern Rajasthan. By mid-July, Himachal Pradesh and the rest of the country also experience the monsoon. By early September, the monsoon starts to withdraw or retreat. So this whole thing shows you कि जो मॉनसून है इंडिया में सबसे पहले जहां बारिश होती है, मॉनसून स्टार्ट होता है, दैट इज केरला. ओके, और यहाँ से फिर स्प्लिट होती है अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच. मैंने आपको वहाँ पे क्लाउड्स दिखाए हैं. तो वो क्लाउड्स यानी कि वो जो एयर है, ठीक है, क्लाउड्स हैं, वो इस तरह से सर्वाइव करते चले, मतलब ऊपर मूव करते चले जाते हैं. अरेबियन सी ब्रांच जो है वो आपका महाराष्ट्र इस तरफ ऊपर रैपिडली वो मूव करते हैं, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो भी रैपिडली मूव करती है. एंड देन उन्होंने आपको डेट्स भी दी है, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका असम हो गया, देन कम्स टू योर महाराष्ट्र, देन गुजरात. ओके, और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं. एंड दैट ब्रांचेस, उसका इफेक्ट कहाँ देखते हैं हम, दिल्ली में. और दिल्ली में मॉनसून आने का कारण है जब वो दोनों ब्रांचेस मर्ज हो जाती हैं. एंड दिस इज हैपेंड एट द एंड ऑफ जून, मतलब जो लास्ट वीक होता है जून का,
उस टाइम उसके आसपास, जैसे उन्होंने टेंटेटिव डेट भी दी 29 जून और 12, तो हम उसको टेंटेटिव मतलब वो 30 जून भी हो सकती है, 28 जून भी हो सकता है, तो इट कैन बी एनी डेट बट द लास्ट वीक ऑफ द जून, ठीक है। तो दिल्ली में मॉनसून होने का कारण जो है दैट इज द बोथ ब्रांचेस ऑफ इंडिया, मतलब जो मॉनसून ब्रांचेस हैं। उसके बाद द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दे सेट की जो ईस्ट आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पर मानसून शुरू होता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एंड द अपर पार्ट जैसे आपका कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और ये अदर, ऊपर अगर हम चाइना की बात करें या ऊपर हम अफगानिस्तान या इधर पाकिस्तान का जो नॉर्थ एरिया डैट, तो वहां पर हमारी बारिश जो मानसून स्टार्ट होता है डैट हैपेंस इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो मॉनसून है वो कैसे विड्रॉ होता है या रिट्रीट होता है, मतलब खत्म कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग तो देखी कि मॉनसून केरला से स्टार्ट होके और धीरे धीरे इस तरह से टाइम पीरियड हमारा बढ़ता है ऊपर, मतलब टाइम पीरियड है सबका स्टार्ट होने का। अब जो रिट्रीट है वो कैसे होता है? Compared to the onset of the monsoon, the retreat is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in the northwestern states of India. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. The islands receive the very first monsoon showers, progressively from south to north, from the first week of April to the first week of May. So the withdrawal takes place. अगर मतलब जो सबसे पहले जो मॉनसून स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले मॉनसून रेंज जो रिसीव करता है दैट इज आवर आइलैंड ग्रुप्स अंडमान एंड लक्षद्वीप, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, और द फर्स्ट वीक ऑफ मे, ये टाइम पीरियड रहता है मॉनसून स्टार्ट होने का आइलैंड्स में। Is progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. This is the start of the winter season. The retreating monsoon winds move over the Arabian Sea and the Bay of Bengal and collect moisture on the way. These monsoon winds reach the southern states of India by October. Result of rainfall. These are called the winter monsoons. The changes in conditions in India can be broadly categorized into 4 distinct patterns. These are the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon, and the retreating monsoon. India has cold weather in the winter that begins in mid-November and lasts till February. December and January are the coldest months in northern India. By contrast, the southern parts of India do not experience very low temperatures. On the eastern coast, the average winter temperatures are high as compared to the average temperatures in the northern plains. For example, in Chennai, the temperature during the winter ranges between 24 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. So, this साउथ पार्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो विंटर के टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हाईएस्ट टेम्परेचर
Celsius to 25 degrees Celsius. Whereas in our north part, on the other hand, in Jammu, the winter temperature may range between 26.2 degrees Celsius and 4.3 degrees Celsius. Frost is a common phenomenon in the North Plains, while the higher slopes of the Himalayas experience snowfall. During winter, the northeast trade winds blow over the country. As these winds blow from land to sea over most parts of India, they are dry. So, in most parts of India, the weather during the winter is dry. विंटर में जो विंड्स चलती हैं दैट इज कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, वो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा ये रीजन है यहाँ से आती है, और ये जो विंड्स हैं ये ड्राई होती हैं. हम सर्दियों में देखते हैं ना कि बिल्कुल वैसी हवा चल रही है, एकदम हमें हवा बिल्कुल ठंडी हवा और एकदम ड्राई रहती है. तो दैट इज व्हाट इट मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होके दे मूव्स टू द सर्द, मतलब जो हमारे कोस्टल एरिया वहाँ मूव करती हैं. एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जो विंटर में जो हमारा वो ड्राई रहता है, जो मॉइस्चर नहीं होता है. However, in some parts of India, like the coast of Tamil Nadu, the winds blow from the sea to the land. Hence, these places receive some amount of rainfall during the winter. In the northern parts of the country, a high pressure region develops. As a result, light winds blow outwards from these parts, passing through the Ganga Valley from the west and the northwest. These parts normally experience low temperatures and low humidity, a clear sky, and feeble, variable winds. These are the features जो हम विंटर जो हमारा सीजन है उसमें हम फील करते हैं, लाइक लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, क्लियर स्काई. ठीक है, स्काई क्लियर रहता है. एंड फीबल वेरिएबल विंड्स. फीबल मतलब जो एकदम ठंडी हवाएं चलती है जो हमको चुभती नहीं है. दे फील मेक अस, मतलब बहुत हमें हमारी पूरी बॉडी उसे फील करती है एकदम ठंडी, जिसे हम ठंडी हवाएं बोलते हैं, फीबल वेरिएबल विंड्स. Other characteristic feature of the winter season experienced over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low-pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western India. Along with the westerly flow, they move into India, causing much-needed winter rains over the plains and. अभी इन्होंने यहाँ पे आपको एक मेडिटेरेनियन रीजन दिखाया है ना. So they are saying to जैसे विंटर्स में हल्की हल्की बारिश होती है एक दो बार, ठीक है, तो हम उसे विंटर रेन बोलते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है. इट कैन बी लाइक फॉर सम टाइम, मतलब कि कुछ आवर्स के लिए या मिनट्स के लिए हम बोलेंगे. तो दैट रेन हैपन्स वाई, मतलब किस चीज की वजह से वो जो विंटर्स में बारिश होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्ली जो डिस्टर्बेंसेस हम उन्हें बोलते हैं. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो मेडिटेरेनियन सी में जो लो प्रेशर एरिया है दैट फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से हम उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, और जिसकी वजह से विंटर टाइमिंग में रेनफॉल होता है. Snowfall in the mountains. The winter rainfall is locally known as Mahavat. So आपकी बुक में ये वर्ड दे रखा है कि विंटर में जो बारिश होती है हम उसको महावत बोलते हैं.
Though the total rainfall in winter is low, it is immensely important for the cultivation of the rabi crop. Tomorrow we'll continue from here. Okay, ma'am. And we'll Thank you, mark ma'am. it. Okay, bye. Thank you, ma'am.